As you all know, the Kvs exam is approaching. This video is for revision and today's topic is error analysis of nouns. This video includes around 20 to 30 questions for practice, and please ignore the condition of my book. This is the same book which I had used during my preparation. In spite of the doctor's stern warning, Latika continued taking sugars in her milk. Let's see which part contains the error. Sugars नहीं होता है sugar because sugar is an uncountable noun and uncountable noun का plural नहीं बनता है. So please remember sugar, not sugars. My friend's actual job involves a lot of administration. In this, here should be the actual job of my friend involves a lot of administration. He learned the alphabets at the age of 4. Which part contains the error? Alphabets. There is no such word alphabets. Alphabet, because this is the term which we use for the group of letters alphabet. So remove the S. The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices. Remember, advices is an uncountable noun and uncountable noun का plural नहीं होता है. So remove S and it should be like as it contains many good pieces of advice. अगर हमें इसको plural भी बनाना है तो we can make it like many good pieces of advice. The job is under the direct of Mrs. Jones. The हम सबको पता है कि द इज द आर्टिकल एंड आर्टिकल के बाद हम नाउन यूज करते हैं. तो हेयर शुड बी डायरेक्शन, नॉट डायरेक्ट. अ 2 bedroom फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है और बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स में आने वाली भी एरर है. फर्नीचर्स नहीं होता है फर्नीचर. यू शैल गेट all the informations if you read this book carefully. Informations नहीं होता है. Again the same reason, informations is an uncountable noun and uncountable noun का plural नहीं होता. We don't make plurals of the uncountable noun. They bought a pen, an import, a pencil and a soap from a store. Again soap is also an uncountable noun, so remove a from here. And soap from a store. Rahul regards negotiating prices with customers as is special expertise. ये error केवल noun में नहीं आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा. We never use same word that has the same meaning. So we don't need special expertise. दोनों का meaning same है. So we can remove one word from here as his expertise. The receptionist gave us much information which we needed. No error. Much informations अभी हमने we have done the same questions. Informations जो है this is an uncountable noun and we don't make plural of the uncountable nouns. Here should be information, not informations. The best known leader among them were महात्मा गांधी, सरदार पटेल and जवाहरलाल नेहरू. Please जब भी आप error find करें so आप आसपास के भी पार्ट्स में देखें कि वहां पर भी कुछ हो सकता है. जैसे कि वर हम सबको पता है दिस इज एन प्लूरल. अब प्लूरल है सो इट शुड बी यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट. हियर the best known leaders, here should be leaders because here it is used and were, not was. The burglar stole all the money in the house but surprisingly missed the jewelries. This is also a very common mistake. Jewelries नहीं होता है, jewelry, only jewelry. Owing to the disturbing noise, the speaker was forced to adjourn the meetings. The meetings, particular एक meeting की बात हो रही है, so here should be meeting, not meeting. So remove the S. Millions of Jews lost their kith and kin in Hitler's concentration camps. Kith and kin का meaning होता है कि अपने relatives और अपने friends को मतलब उन्हें खो दिया. तो हिटलर्स कंसेंट्रेशन किसकी बात हो रही, किसने खोया, हिटलर ने खोया. सो टू शो द पोजीशन वी ऑल नो दैट वी यूज हिटलर्स एस एपिस्ट्रॉफी एस. सो मेक इट हिटलर्स कंसेंट्रेशन कैंप्स. मदर इन लॉज आर न्यूसेंस. ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. ऑलवेज यूज मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ. क्योंकि जब हम कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं तो वी ऑलवेज एड एस इन द मेन वर्ड और यू कैन से रूट वर्ड. सो हियर द रूट वर्ड इज मदर, सो वी विल मेक प्लूरल ऑफ मदर, मदर्स इन लॉ. ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आईज retained a look of solemnness of his प्रपोजिशन के बाद नाउन यूज करते हैं तो here should be solemnity. I shall go by the 3 o'clock train. Very easy. We don't use 3 o'clocks. It should be 3 o'clock. I told him the story in details to make him understand it fully. Here should be this phrase
कॉमन फ्रेज है, इन डिटेल्स नहीं होता है, द स्टोरी इन डिटेल। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। चिल्ड्रन इज इटसेल्फ अ प्लूरल, सो हेयर शुड बी चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रंस। ये चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन ट्रेवलिंग दीज डेज। अगेन लगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, सो हेयर शुड बी लगेज नॉट लगेजेस। दिस इज अ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। हम किसकी बुक की बात कर रहे हैं? जॉन्स की बुक की टेबल। तो टू शो पोजिशन we all know we add apostrophe s in the name. So this is John's book on the table. You can see in this topic most of the errors are based on uncountable nouns. Natural sceneries are selling like hot cakes. Sceneries नहीं होता है, scenery not sceneries. You shall get all the informations. ये सेम एरर 3 बार हमें दिखा है, informations नहीं information. We can decide it only after further investigation. Here should be further not farther. Farther it is used for to show distance and further कुछ हम एडिशनली बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन। प्लीज अरेंज फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन तिरुपति। एक फ्रेज होता है और यू कैन से एक ग्रुप वर्ड्स यूज किया जाता है, बोर्ड एंड लॉज। प्लीज अरेंज फॉर माई बोर्ड एंड लॉज इन तिरुपति। 2 million people attend the meeting held in पैरेड ग्राउंड। एक रूल होता है कि whenever we use cardinal adjective, तो cardinal adjective के बाद हम जैसे 1 2 3 होता है तो उसके बाद we use singular, so here should be 2 million people not 2 million people, क्योंकि cardinal के बाद हम singular use करते हैं, cardinal adjective के बाद 2 million people attend the meeting. Yesterday it rained like cats and dogs. Cats and dogs हम already comparison कर रहे हैं, so यहाँ पे like की word की कोई भी need नहीं है, so it rained cats and dogs, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं।